नमस्कार, मैं निखिल आनंदगिरी। 15 अगस्त 1947 हम सब इस तारीख से अच्छी तरह परिचित हैं। आज़ाद भारत का पहला दिन। ठीक इसी वक्त पाकिस्तान भी हमसे अलग हुआ और आज़ाद भी हुआ। दोनों देशों में एक बुनियादी फर्क रह गया और वो था संविधान। भारत का संविधान जहां सिर्फ 2.5 सालों में बनकर पूरा हो गया, पाकिस्तान को अपना संविधान बनाने में 25 साल यानी 1972 तक का वक्त लग गया। हम ये काम इतनी जल्दी इसलिए कर पाए क्योंकि हिंदुस्तान के पास संविधान के लिए सोचने, लिखने और बनाने के लिए एक भारत रत्न मौजूद था। जी हाँ, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें उनकी 127वीं जयंती पर नमन करने हम सब यहाँ उपस्थित हैं। एमडी सर, सभी निदेशक गणों और आप सबका इस कार्यक्रम में मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। कार्यक्रम की शुरुआत के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमती अंजू कनौजिया जी को कि वो मंच पर आएं और आज की शुरुआत एक औपचारिक स्वागत गान से करें। अंजू जी शास्त्री पार्क ट्रेनिंग स्कूल में कार्यरत श्री संतोष कनौजिया जी की पत्नी हैं। तबले पर उनका साथ देंगे उनके पुत्र आर्यन कनौजिया। शुभ स्वागतम् अथ स्वागतं शुभ स्वागतम् आनन्दमङ्गल मङ्गलम् आनन्दमङ्गल मङ्गलम् इति प्रियमतिथि आगमन् स्वागतं शुभ स्वागतम् अथ स्वागतं शुभ स्वागतम् स्वागत प्यारे अतिथि हमारे इस प्रांगण में आए हैं। स्वागत प्यारे अतिथि हमारे इस प्रांगण में आए हैं। मेट्रो में आप सभी का नतमस्तक है अभिनंदन में। मेट्रो में आप सभी का नतमस्तक है अभिनंदन में। सानिधपग अभिनंदनम् 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 आनन्दमङ्गल मङ्गलम् आनन्दमङ्गल मङ्गलम् इति प्रियमतिथि आगमन् स्वागतं शुभ स्वागतम् अथ स्वागतं शुभ स्वागतम् बाबा साहिब आए भारत में बहार आ गई। बाबा साहिब आए भारत में बहार आ गई। कोकिला का उठी स्वागत में आपका। कोकिला का उठी स्वागत में आपका। सानिधपग अभिनन्दनम् 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 आनन्दमङ्गल मङ्गलम् आनन्दमङ्गल मङ्गलम् इति प्रियमतिथि आगमन् स्वागतं शुभ स्वागतं
स्वागतम् अथ स्वागतं शुभ स्वागतम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् इति प्रियमतिथि आगमन् स्वागतं शुभ स्वागतम् अथ स्वागतं शुभ स्वागतम् अथ स्वागतं शुभ स्वागतम् अथ स्वागतं शुभ स्वागतम्। बहुत बहुत शुक्रिया अंजू जी। आर्यन जिसे आप तबले पर देख रहे हैं वो 10th क्लास के छात्र हैं डीएवी प्रीत विहार के। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां इसमें। अब मैं अनुरोध करूंगा डायरेक्टर फाइनेंस श्री के सबरवाल सर से कि वो मंच पर आएं और आज के इस विशेष आयोजन पर 2 शब्द कहें। Respected MD sir, fellow directors, executives and employees, and ladies and gentlemen, I deem it a great privilege to stand here and pay homage to the great son of India, Bharat Ratna Dr. B.R. Ambedkar. Through his life and struggles, he showed the nation how the marginalized sections of the society could mobilize themselves and uplift themselves. It is he who showed us tremendous role that education plays in shaping our destinies and in bringing about desired social changes. Dr. Ambedkar was a man of endless virtues, though primarily he is famous as being the chief architect of the Indian Constitution. He was also instrumental in bringing about great changes in various aspects of Indian society and in making it more equal and just. We in DMRC are an equal opportunity employer and are committed to ensure for our employees a very happy working atmosphere without any discrimination on the basis of caste, class, religion, etc. Our efforts have met with great success, and today we have 2037 number of SC employees and 814 number of ST employees on our rolls out of a total strength of about 12,677 as on date. In percentage terms, it works out to 16.06% and 6.42% for the 2 classes. We are working to correct this shortfall. In fact, we have recently launched a special recruitment drive to make up this deficiency. We have recently amended the rules with regard to allotment of quotas and granted 10% reservation in type 2 and 5% in type 3 and type 4 for SC/ST employees. As I just mentioned, we have launched a special recruitment drive to make up the deficiencies. We have relaxed evaluation standards for SC/ST candidates in both recruitment and promotional. We are charging reduced fee from these employees, these potential employees, so as to ensure that money does not become a constraint for them. A liaison officer, as required under law, is in place to watch proper implementation of the reservation policies of the government. All these are meant to promote DMRC as an egalitarian place where everyone can flourish. There are many other measures that DMRC has been taking from time to time to promote betterment of all sections of the society. The light that has been lit by Dr. Ambedkar will continue to glow for all times to come. It is up to us to imbibe the great lessons that he has left for us. As we salute and pay homage to Baba Sahib, it would be worthy to recall his life and times and draw necessary lessons. I once again welcome you all in this great journey towards a more equal, fair and just society. Thank you very much. थैंक यू सर। एक पुरानी कहावत है,
हर सफल इंसान के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। बाबा साहब अम्बेडकर की सफलता के पीछे भी उनकी जीवन संगिनी रमाबाई अम्बेडकर का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। अक्सर इतिहास लिखने वालों की नज़र महापुरुषों पर केंद्रित होती है। यही कारण है कि रमा जी के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ जानकारी हमें मिलती नहीं है। मगर हमने आज के कार्यक्रम में सोचा कि क्यों ना बाबा साहब से पहले माता रमाबाई अम्बेडकर को याद किया जाए। प्रस्तुत है ये ग्रुप सॉन्ग, जिसे तैयार किया है रूपा गौतम, शिखा, निधि और अंजू जी ने। गिटार पर इनका साथ देंगे श्री आयुष गर्ग, तबले पर आर्यन और कॉन्गो पर पंकज राव जी। रमाबाई के बचपन का नाम रामी था। बचपन में ही माता पिता की मृत्यु हो जाने के कारण रामी और उसके भाई बहन अपने मामा और चाचा के साथ बंबई में भाईखला आकर रहने लगे थे। रामी का विवाह 9 वर्ष की उम्र में सूबेदार मेजर रामजी मालोजी सकपाल के सुपुत्र यानी भीमराव अंबेडकर से वर्ष 1906 में हुआ। उस समय भीमराव की उम्र सिर्फ 14 साल थी और वो 10वीं कक्षा में पढ़ते थे। शादी के बाद रामी का नाम रमाबाई हो गया। शादी के पहले रमा बिल्कुल अनपढ़ थी, किंतु शादी के बाद भीमराव जी ने उन्हें साधारण लिखना पढ़ना सिखा दिया, जिससे वो हस्ताक्षर कर लेती थी। डॉक्टर अंबेडकर रमा को रमो कहकर पुकारते थे, जबकि रमाबाई बाबा साहब को साहब कहती थी। आइए सुनते हैं ये ग्रुप सॉन्ग। रमाई माता की, रमाई माता की भाव कहानी है ये। रमाई माता की भाव कहानी है ये। उनके त्यागों से भी जिंदगानी है ये। उनके त्यागों से भी जिंदगानी है ये। माता रमाई माता, माता पूजे माता। माता रमाई माता, माता पूजे माता। घोर गरीबी में जीवन बिताया, कभी नहीं देखी सुख की छाया। शक्ति साहिब की बनी दुख की राह चुनी। शक्ति साहिब की बनी दुख की राह चुनी। नारी बहुत ही स्वाभिमानी है। नारी बहुत ही स्वाभिमानी है ये। 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 माता रमाई माता, माता पूजे माता। माता रमाई माता, माता पूजे माता। अपने लालों को हम पर लुटाकर, दुख की अग्नि में खुद को जलाकर, दिलवाया हमको सम्मान माता बनी महान। दिलवाया हमको सम्मान माता बनी महान। तुम्हारे त्यागों की अमिट निशानी रहे। तुम्हारे त्यागों की अमिट निशानी रहे। निशानी रहे, निशानी रहे। निशानी रहे, निशानी रहे। माता रमाई माता, माता पूजे माता। माता रमाई माता, माता पूजे माता।
भी परेशानी रहे, कौन भी परेशानी रहे, मातर माई माता, माता पूजे माता, मातर माई माता, माता पूजे माता, माई माता की भव कहानी है, माई माता की भव कहानी है, उनके त्यागों से मिली जिंदगानी है, उनके त्यागों से मिली जिंदगानी है, मातर माई माता, माता पूजे माता, मातर माई माता, माता पूजे माता, मातर माई माता, माता पूजे माता। बहुत बहुत शुक्रिया। इस सुंदर गीत के बाद अब बारी है बाबा साहब के बारे में विस्तार से समझने की। वही बाबा साहब जो कहते थे, जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता नहीं हासिल कर लेते, कानून आपको जो भी स्वतंत्रता देगा वो आपके लिए बेईमानी है। मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। आइए देखते हैं एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो बाबा साहब की जीवनी पर आधारित है। इस फिल्म को हमने साभार लिया है नेटवर्क 18 चैनल की लाइब्रेरी से। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, give to ourselves this constitution. The preamble to the Constitution of India is something every school-going child knows by heart. 85 words that define the spirit of our democracy. Every word very carefully chosen by the nation's first law minister, Ambedkar. He's the man who was the chief architect of our constitution, also the Dalit icon who gave millions a voice against discrimination. But his story is much, much more than that. And it all begins really in this small school in Satara. Books in hand, 9-year-old Bhim walked into Maharaja Pratap Singh High School in the year 1900. But for the man who authored India's finest piece of writing, his baby steps in learning were a travesty. His first lesson was the existence of caste. Bhim was a Mahar, a caste of untouchables whose traditional duty was to dispose of dead cattle. Banished to the bottom of the Hindu society, their touch, their voice, even their shadow was seen to be polluting. Inside school, Brahmin teachers refused to teach little Bhimrao. Some agreed, but made him and his brother sit in a corner on gunny bags that they carried from home. The humiliation was endless. If the boys got thirsty, they had to wait for a peon to come in and pour water into their mouth, because outcasts weren't allowed to touch either the water pot or the water inside it. And God forbid, if the peon was absent, then the boys would go thirsty the entire day without a single drop of water. Young Bhim responded in the best way he could. His sheer academic brilliance won him grudging admiration and a new surname. कहा जाता है कि इसी स्कूल में उनको अंबेडकर, ये जो नाम है पहले अंबावडेकर था, इसी स्कूल के जो अध्यापक थे उन्होंने उन्हें अंबेडकर ये नाम इसी स्कूल में दिया. But a new surname didn't help. When Ambedkar's family moved to Bombay, the prestigious Elphinstone High School did admit young Bhim, but did not let him learn Sanskrit. The language of the ancient Vedas could not be polluted. He was forced to study Persian instead. Turn in any direction you like.
Caste is the monster that crosses your path. You cannot have political reform, you cannot have economic reform, unless you kill this monster. In 1907, Dr. Bhimrao Ambedkar became the first person from his community to get a matriculation from the Elphinstone School. It was an uncommon achievement, but what followed, even more so. After getting a scholarship from the King of Baroda, he chose not to sail to England, as was the trend in those days, but to go instead to America for higher education. It was the land of equality and liberty. Columbia University opened up a new world for Ambedkar, a world of books and of new ideas. A man of versatile intellect, he first obtained a doctorate in social sciences and then moved to London to study law and economics. Ambedkar would go on to author over 50 books. Caste was his favorite subject, but he also wrote about economics, law, even a work that controversially supported partition. He was a legal brain, a constitutional brain, a top-class economist. He also wrote some important works in sociology of the caste system, the most well-qualified intellectually of any Indian politician of the 20th century, probably ever. Dr. Ambedkar, Maharaja is expecting you. From England, Dr. Ambedkar returned to work for his benefactor, Sahaji Rao Gaikwad, who was the ruler of Baroda. Sir, I need a place to stay. You can't stay. Only to realize that all the degrees in the world couldn't get him a room to stay. At work too, he faced insults almost every day. Look here, you might be a senior officer, but you can't touch this water. You could see the shine on his face of intelligence with all that he came. But a small office, his core people, they were mere simple clerks. They were high caste. They say that you can't take water from the same pot as we drink. But if you see very carefully, the revolt comes first there. He says, no, I will drink water from the same pot. Dr. Ambedkar returned to Bombay in 1917, staying in a two-room chawl with his wife Ramabai. The Swaraj movement was gaining strength, but Ambedkar wasn't impressed. The young nonconformist had a strong mind of his own. Writing in Muknayak, The Dumb Hero, a newspaper he started in 1920, Ambedkar says, A Swaraj where no fundamental rights were guaranteed for the depressed would be no Swaraj for them at all. It would be a new form of slavery. As India's freedom movement gathered momentum, Dr. Ambedkar began teaching political economy at Bombay's Sydenham College. Initially skeptical, even Brahmin students became lifelong disciples after listening to his lectures. This portrait, which hangs in the college today, is a testimony of his impact. In 1923, Dr. Ambedkar started his law practice at the Mumbai High Court. But the outcast lawyer found cases hard to come by in spite of his brilliance. For Ambedkar, it was now time to openly challenge the dark clouds of Hindu orthodoxy. He founded the Bahishkrit Hitakarmi Sabha the same year to mobilize Dalits against their exploitation. 4 years later, he did the unthinkable. At the time, this water tank at Mahad in Maharashtra could be used by everyone. Hindus, Muslims, even cattle, except the Bahishkrits, the outcasts. But now the time for waiting was over. Bhimrao led by acting himself. Self-respect, self-help, he thundered, leading scores of outcasts to the water tank. As he touched the water and drank it, the crowds followed.
The impact of Dr. Ambedkar's act was revolutionary. 85 years later, his grandson Prakash repeats the same act at the same tank without a second thought. It is something that explains Ambedkar's legacy. It wasn't just about water, it was about humanity and equality. Untouchables had accepted caste system mentally. And therefore, since they had accepted his mentally, he said that mental slavery is first which should be attacked and then the physical slavery. To get out of this mental slavery, he said water which was being denied to a common man, if I can pick it up and drink it, then the other man, then the rest of the people will have a confidence in the whole thing. And therefore, he exercised the right in this right over here, and lakhs of people followed him. A day later, when priests carried out a purification ceremony at the water tank, Ambedkar was deeply hurt. 8 months later, he returned to Mahar, this time to ceremoniously burn the Manusmriti, a book he described as the Bible of slavery. Ambedkar's anti-caste movement rapidly gained momentum. Nasik's Kalaram temple was the next target. Ambedkar and his supporters laid siege at the temple gates in 1930, demanding untouchables be allowed to enter. But Baba Saheb's temple entry movement was met with a lot of resistance that only fueled his disillusionment with Hinduism. Though I was born a Hindu, I solemnly assure you that I will not die as a Hindu. 20 years later, he would fulfill his vow. Dr. Bhim Rao Ambedkar was now a voice India couldn't ignore. From within the freedom struggle, he was attempting to carve out a political relevance for the Dalits. For him, it was the only way to emancipate India's 16 million outcasts. Ambedkar's decision to accept an invitation to the Round Table Conference in London greatly angered the Congress. The party called him a British stooge. And so the stage was set for a confrontation between two champions of the downtrodden, Gandhi and Ambedkar. While their goal was similar, their method was somewhat different. Ambedkar was more radical, more confrontationist. He wanted to take the Dalits outside the Hindu fold. Gandhi thought that by abolishing untouchability, by giving Dalits greater political opportunities, Hinduism could be saved. But despite their differences, I think in retrospect, they should be seen as co-workers. The British announced the communal awards for Dalits in 1932, granting separate electorates and seat representation to minority communities. An upset Gandhi announced his resistance with a fast unto death at Pune's Yerwada jail. As the fast grew and Gandhiji started losing his health, everybody started trusting Dr. Ambedkar, and Dr. Ambedkar said, okay, I'll consider. And that is how the negotiations took place. And finally, the Pune Pact has come up in the whole thing. But in this you will find Gandhiji understood Ambedkar's pain. He understood Gandhiji's agony, no doubt about it. I mean, he said, it is there in my film, that you are born untouchable, but I adopted myself as untouchable. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. On 15th August 1947, as India finally awoke to freedom, the earlier bitterness between the two stalwarts was now matched by maturity and wisdom. It was Gandhi who recommended Ambedkar's name as India's first law minister.
As Law Minister, Dr. Ambedkar chaired the drafting committee whose onerous task was to give a complex India her constitution. The boy who was once refused admission in school because of his caste was destined to write India's Bible of governance. Our difficulty, as I said, is not about the ultimate future. Our difficulty is how to make the heterogeneous mess that we have today take a decision in common and march in a cooperative way on that road which is bound to lead us to unity. On November 26, 1949, India got her constitution. A reflection of Baba Saheb Bhimrao Ambedkar's faith in democracy and social justice. Regarded as one of the finest in the world, it banned untouchability in India. Justice, liberty, and equality became every Indian's fundamental right. The universality of his ideas were visible in other spheres as well. His politics was always inclusive. His policies were always inclusive. You can look at his work in this labor government, interim government in 1942. For example, minimum wages, he was asking for everybody. Good life conditions, working conditions for laborers, he was asking for everybody. Maternity leave for women, he was asking for every woman, not simply for Dalit women. So I think his imagination is universal and politics is inclusive in character. Dr. Ambedkar was getting old now, but the hunt for challenges continued. The violin was one such new passion. बाबा साहब दिल्ली से यहाँ बम्बई में आते थे तो उनको खास बुलावा भेजते थे कि भाई हमारे पास चले आइए, अब हम आ गए हैं, हमें अपनी तालीम आगे चालू रखनी है। तो उनके पास कितनी भी बड़ी हस्तियाँ बैठी हो, उनको वो बोल देते थे, अभी हमारे गुरुजी आ गए हैं, अब आपके लिए समय हम अभी नहीं देंगे, उनका काम खत्म होने तक आपको बाहर बैठना होगा। बाबा साहब बड़े सेंटिमेंटल थे। उनके मन में क्या था पता नहीं है, उनके मन में कुछ किसी ने बताया कि कुछ दुख था और वायलिन के जो सुर है वो उनको एक किस्म की तसल्ली देते थे। The sadness perhaps came from losing his wife Ramabai and 4 of his sons at a young age. In 1948, at the age of 57, Baba Saheb remarried. His wife, Dr. Sharda Kabir, was a Brahmin. The New York Times described the wedding as more significant than a commoner marrying into royalty. But Dr. Ambedkar wasn't done yet. He began drafting the Hindu Code Bill, aiming to grant women greater legal rights in the country. But his efforts to reorganize the framework of Hindu society were short-lived. The bill aroused bitter controversy and was abandoned by Prime Minister Nehru. Ambedkar quit the Union Cabinet in disgust in 1951. What he did next shook the very foundations of Hinduism. On 14th October 1956, Dr. Ambedkar reached the Diksha Bhumi in Nagpur, accompanied by his wife. With lakhs of supporters as witness, Baba Saheb renounced Hinduism to embrace the path of Buddha. Poor lakh of his followers converted with him that day. Two months later,
Baba Sahib Ambedkar passed away at the age of 65. Five decades later, Baba Sahib Bhimrao Ambedkar's legacy is more relevant than ever, leaving an impact deeper than many imagine. कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं बाबा साहब पर एक कविता प्रदीप कुमार जी से। प्रदीप दिल्ली मेट्रो में सीनियर ट्रेन ऑपरेटर हैं। मैं अनुरोध करता हूं अपने गायक कलाकारों से कि वो इसी बीच मंच पर अपने अगले प्रस्तुति की तैयारी कर लें ताकि हमारा समय बचे। श्री प्रदीप। सिंबल ऑफ नॉलेज, भारत रत्न संविधान के शिल्पकार बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करते हुए सम्मानित मंच, दिल्ली मेट्रो परिवार के मुखिया और समस्त दिल्ली मेट्रो परिवार को जय भीम, जय भारत। सभी को बाबा साहब के 127वें जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। फिलहाल हम सब लोगों ने देखी, इमोशनली चीज़ें समझ में आती हैं। खैर हम लोग सही दिशा की ओर बढ़ रहे हैं और 21वीं सदी में जी रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि हम इन चीज़ों से ऊपर उठकर, जाति और धर्म से ऊपर उठकर एक नए भारत के निर्माण करेंगे जो बाबा साहब के सपनों का भारत होगा, हम सब के सपनों का भारत होगा। बाबा साहब का संघर्ष, उसी को मैं अपनी कविता में परोते हुए आप सबसे जुड़ता हूँ। त्याग और संघर्ष की मिसाल देख लो, त्याग और संघर्ष की मिसाल देख लो, माँ भीमा बाई का वो लाल देख लो। त्याग और संघर्ष की मिसाल देख लो, माँ भीमा बाई का वो लाल देख लो। नामुमकिन भी हो सकता है मुमकिन यहाँ, यकीन ना आए तो बाबा साहब का कमाल देख लो, बाबा साहब का कमाल देख लो। स्वाभिमानी सिंहासन पर जो विराजमान है, नतमस्तक पूरी दुनिया ऐसा जिसका ज्ञान है। स्वाभिमानी सिंहासन पर जो विराजमान है, नतमस्तक पूरी दुनिया ऐसा जिसका ज्ञान है। जिस कौम को पढ़ने ना दिया सदियों यारों यहाँ, देख लो उस कौम का बेटा विद्वानों का विद्वान है। देख लो उस कौम का बेटा विद्वानों का विद्वान है। कतरा कतरा लहू का देकर भी तुम कर्ज ना उसका चुका पाओगे। अभी बात हुई थी शुरू में कि हमको 2 साल 11 महीने 17 दिन लगे, 18 दिन, और उधर 25 साल लग रहे हैं। तो शायद ये चीजों को हमको समझने की जरूरत है कि हम 3 साल के अंदर लगभग भारतीय संविधान का निर्माण कर लेते हैं, उधर 25 साल लग रही है। और हमको क्रेडिट देना चाहिए उस शख्सियत को, और शायद कुछ चीजें हमको रोकती हैं क्रेडिट देने के लिए। उन चीजों से ऊपर उठ के हमको क्रेडिट देने के बारे में बात करनी चाहिए। तो मैं सोचता हूँ कि बहुत बड़ा एहसान बाबा साहब अम्बेडकर का हम पर है। मैं जोड़ता हूँ अपने इस मुक्तक को बाबा साहब अम्बेडकर से। कतरा कतरा लहू का देकर भी तुम कर्ज ना उसका चुका पाओगे। कतरा कतरा लहू का देकर भी तुम कर्ज ना उसका चुका पाओगे। कदम कदम पर मिलेंगे एहसान उसके, बताओ कैसे उसे भुलाओगे। हाँ आदत सी हो गई है तुमको सच्चाई से मुंह चुराने की। हाँ आदत सी हो गई है तुमको सच्चाई से मुंह चुराने की। कभी देखना आईना खुददारी का, अपनी ही आंखों से आंखें चुराओगे। अब मैं अपनी कविता के साथ आपसे जुड़ता हूं, उस शख्सियत को नमन करता हूं। जब मैं सुबह को उठता हूं तो बाबा साहब की याद इस वजह से आती है कि मुझे पानी पीने का अधिकार बाबा साहब की वजह से मिला, मुझे अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार बाबा साहब की वजह से मिला। मैं अपने बच्चे को छोड़ने के लिए जाता हूं तो मुझे याद आती है कि बाबा साहब की वजह से मुझे पढ़ने का अधिकार मिला। जब मैं अपनी पत्नी को ड्यूटी जाते हुए देखता हूं तो मुझे मालूम पड़ता है कि महिला सशक्तिकरण की जो एक अलख है वो बाबा साहब अम्बेडकर ने जगाई। तो मुझे लगता है कि उन सारी चीजों को हमको समझने की जरूरत है जो बाबा साहब अम्बेडकर हमको देके गए। और मैं अपनी कविता को आपके सामने रखता हूं। नमन करो सब मिलकर भारत के उस बेटे को, नमन करो सब मिलकर भारत के उस बेटे को। भारत का संविधान बनाया ज्ञानी उस अनूठे को। भारत को दे दी पहचान विश्व में जिसने नाम किया। भारत को दे दी पहचान विश्व में जिसने नाम किया। देश विदेश में होते चर्चे ऐसा उसने काम किया। ज्ञान का प्रतीक बना भारत का वो बेटा। सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब अम्बेडकर को कहा गया। ज्ञान का प्रतीक बना भारत का वो बेटा। हर कोई उसको नमन करे चरणों में नेता लेटा।
उठा दिया शोषित को उसने सदियों से लेटे को, नमन करो सब मिलकर भारत के उस बेटे को, नमन करो सब मिलकर भारत के उस बेटे को। शोषितों के हक की खातिर उसने लड़ी लड़ाई थी, शोषितों के हक की खातिर उसने लड़ी लड़ाई थी, समता मैत्री भाईचारे की उसने अलख जगाई थी, जात पात की तोड़ी बेड़ियां धर्म की दी आजादी। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं वी आर इंडियंस फर्स्ट एंड लास्ट। तो मुझे लगता है कि शायद बाबा साहब के मैसेज और टीचिंग्स हम लोगों के बीच में आने रहे, हम उस चीज को आगे बढ़ाएंगे। जात पात की तोड़ी बेड़ियां धर्म की दी आजादी, शोषण की बुनियाद पुरानी एक पल में हिला दी, हंसा दिया शोषित को उसने सदियों से रोते को, नमन करो सब मिलकर भारत के उस बेटे को। भारत का स्वाभिमान बचाया ऐसा संविधान रचाया, भारत का स्वाभिमान बचाया ऐसा संविधान रचाया, दिला दी हमको आजादी रोतों को उसने यहाँ हंसाया। न्याय की उसने बात करी समता का एहसास रहे, न्याय की उसने बात करी समता का एहसास रहे, हर किसी को हो आजादी भाईचारा यहाँ खास रहे। सबको दिए अधिकार बराबर बड़े और छोटे को, सबको दिए अधिकार बराबर बड़े और छोटे को, नमन करो सब मिलकर भारत के उस बेटे को। युगों युगों तक नाम रहे, युगों युगों तक नाम रहे ऐसा तुमने काम किया, युगों युगों तक नाम रहे ऐसा तुमने काम किया, हम तो हैं ऋणी तुम्हारे जो हमको संविधान मिला। धरती अंबर है ये जब तक नाम तुम्हारा गूंजेगा, धरती अंबर है ये जब तक नाम तुम्हारा गूंजेगा, भारत का हर बच्चा बच्चा हमेशा तुमको पूजेगा। तुमने दिया अधिकार बराबर, तुमने दिया अधिकार बराबर बेटे और बेटी को, नमन करो सब मिलकर भारत के उस बेटे को, नमन करो सब मिलकर भारत के उस बेटे को। भारत का संविधान बनाया ज्ञानी उस अनूठे को। जय हिंद जय। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप इस कविता के लिए। अब कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति एक और ग्रुप सॉन्ग जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर आधारित है, प्रगति की राह पर। और गायक कलाकार हैं तुलिका, नीतू, विनीता और त्रिशला। ये सब हमारे DMRC में SCTO के पद पर हैं। गिटार पर हैं आयुष गर्ग, कॉन्गो पर पंकज राव और तबले पर अतुल। प्रगति की राह दिखाई तुमने ओ बाबा साहिब, प्रगति की राह दिखाई तुमने ओ बाबा साहिब, जीने की शान बढ़ाई तुमने ओ बाबा साहिब, तुमने ओ बाबा साहिब। वतन के हमारे जिम्मेदार की यहाँ थी कई प्रथा, अधिकारों की कमी से बढ़ी निरंतर हमारी व्यथा। ये समझा वही जिसका था हृदय एक पिता समान, लड़कर विषम रूढ़ियों से संवरना हमें चाहा, जिद से हक हमको दिलाया तुमने ओ बाबा साहिब, तुमने ओ बाबा साहिब। पारस न समझे हमें, पराया धन समझे, संपत्ति में भी ना हिस्सा कोई इंसान ही ना समझे। पिता पुत्र और पति पर निर्भर
कटे ललकारना सिखाया तुमने ओ बाबा साहेब ललकारना सिखाया तुमने ओ बाबा साहेब तुमने ओ बाबा साहेब प्रगति की राह दिखाई तुमने ओ बाबा साहिब जीने की चाह बढ़ाई तुमने ओ बाबा साहिब तुमने ओ बाबा जोरदार तालियां सब कलाकारों के लिए जिन्होंने बहुत ही कम समय में 2 या 3 दिनों में सारी तैयारियां पूरी की हैं। इसीलिए अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे एमडी सर से कि वो आए और इस मौके पर 2 शब्द कहें।